Hello everyone. Today we will study about the binding energy of nucleus. So in the previous lectures and previous classes you have studied that a nucleus consists of two nucleons. Nucleons का मतलब any two particles जो हमने पहले पढ़ा हुआ है जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So which are collectively known as nucleons. And second thing, I think you are already aware with these things. Einstein energy mass relationship. So ये आपने पढ़ा है E equal to mc square जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. So this relationship will going to be very helpful in understanding the binding energy of nucleus, like how it varies with the corresponding you can say mass number. So it will be described as E equal to mc square. So the next thing I am going to discuss is like a nucleus consists of protons and neutrons. So I'm going to describe this energy, like what is binding energy. Binding energy is the energy required to separate apart the composite particles in a nucleus. So nucleus के अंदर क्या होता है? Nucleus consists of nucleons which say protons and neutrons. So protons, neutrons जिस कंबाइंड स्टेट में है न्यूक्लियस के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है जिस एनर्जी की, सो दैट एनर्जी विल बी गोइंग टू कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. सो फॉर एग्जांपल से दैट एनर्जी इज ई बी. So B is a subscript for binding energy and the corresponding change in mass is delta M. So now I am going to illustrate further the relationship between the mass of the nucleus which gets formed after combining the constituent particles and the energy required to break away all those constituents. So you can see that total mass, so you can see total mass of the nucleus which is having a mass number of A, mass number of A, say for an element having atomic number Z and mass number is A. So इसके लिए मैं एक फॉर्मूला डेराइव करूँगा. So उसका मतलब क्या है, जो डेल्टा M आ रहा है आपका यहाँ पे should be small m. यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आप कंस्टिट्यूएंट मासेस का जो पहले सम करना पड़ेगा, कितना आ रहा है सम. सो Z क्या है, एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, जितने एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर इक्वल. सो विच इज डिस्क्राइब्ड एज Z टाइम्स जो एक प्रोटॉन का मास है. लेट्स से दिस इज MP. सो P इज सब्सक्रिप्ट फॉर प्रोटॉन एंड दूसरा क्या बच गया, दूसरा जो है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्क्राइब होता है, टोटल जितना मास नंबर होता है उसमें से अगर हम एटॉमिक नंबर निकाल दें, सो अपने पास क्या आएगा, विच इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो n, या फिर A माइनस Z भी लिख सकते हो, A माइनस Z टाइम्स mn. और जो अपने पास ऑब्जर्व मास आ रहा है, अपने पास ऑब्जर्व जो मास आ रहा है, मतलब कि इनको कंस्टिट्यूएंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जो अपने पास न्यूक्लियस बन के आता है, फिर वो जो इसका जो मास आ रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल M से. और फिर इन दोनों को सम करने के बाद और इसमें से माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी नोन एज मास डिफेक्ट ऑफ द nucleus. Further,
पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग डिफेक्ट हो रही, पैकिंग डिफेक्ट। सो पैकिंग डिफेक्ट में क्या होता है, पैकिंग डिफेक्ट जो होता है FB, इसको बोल सकते हैं पैकिंग डिफेक्ट, विच इज गोइंग टू बी रेशियो ऑफ डेल्टा M अपॉन नंबर ऑफ टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच इज मास नंबर। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिलेशनशिप आ रहा है विच इज नोन एज पैकिंग डिफेक्ट। So the remaining concepts and the further details I am going to discuss in the next lecture. So this is a very like introductory lecture in nuclear physics. Thank you.